आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है। आवाज आ रही बहुत है? अच्छे से आ रही है। वाशु जी आपको आवाज आ रही है? बहुत बहुत अच्छे से आ रही है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज तो वाशु को सारी आवाजें बहुत अच्छे से सुनाई देंगी। जोर हाँ जोर से क्लियर, वाशु। एकदम क्लियर। आई जस्ट वांट टू से आई जस्ट वॉच्ड, इतने सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आए हैं। पीपल आर सो प्राउड। Some glitch, connection glitch with मैम्स आपका वाईफाई। सही वाशु चल रहा है। मैम, हेलो। कैन यू आपकी ऑल हियर वॉइस मी? थोड़ी सी ग्लिच हो रही थी। आ रही है आवाज? कैन यू हाँ। ऑल हियर मी नाउ? नाउ ओके? कंटिन्यू, यू सेइंग आपको कॉल्स आ रहे थे बड़े सारे। Everyone is so excited, and I'm so proud of Vashu. Since the time he came into my gang, I've seen him perform every single task, and he gave it. There is some glitch with her network. Vashu, Vashu, are you having the same problem? Network में भी कोई issue है? Guys, किसका? Is it my glitch or is it their glitch? Because I can't see them. उनका buffering में अटका पड़ा है. दिक्कत हो रहा है. Guys, I think there's some network glitch at your end. Mine is okay, I think. I think Vashu's net has gone now. Can you see Vashu? Vashu left. No, I can't see Vashu, but I can see you now. Okay, just give me 1 second. You can see me, right? Yeah, I can see you. I can see you. But let me see if I can. I try adding Vashu again. Yeah. आपसे भी बात करनी है जी। पहला सीजन गैंग लीडर को और जी ले गए जी। बहुत मजा तो आया है और बहुत मजा आ रहा है अभी। धमाल कर दिया आपने तो। आपसे तो सुकून से भी वार्तालाप करेंगे, हम सबको लाते हैं। बट मैन, व्हाट अ सीजन, रिया। It has I was just been amazing, Manu. It has just been amazing. Like I'm feeling so happy. I'm feeling so proud, and I'm so proud of these boys. Like, I know, like we won, but I'm also proud of the other two boys because super. अगर आपको याद है तो how difficult are those tasks? How difficult is the high alt में सांस भी नहीं ली जाती और वहां जाके ऐसा परफॉर्म करना, like it is like the most incredibly difficult feat, and they've done it. I second that. And they've done it. I was looking back. I remember first time I met Rhea, and my first interview. I remember audition में मैं green shirt पहन के आया था, and then I was, that was the first time I was speaking to you, and I was, we had that basic constant. I'm like, okay, ladies and gentlemen, boys and girls, I have the boss woman with me. If you remember, the first time I spoke to you, that was the boss woman, and the boss woman has proved it. The boss woman's boy has taken the trophy home. What a wholesome season you had, yeah. I think मुझे बड़ा मजा आया. I think be it on the show, be it off the show, yeah. And it has been an honor sharing the stage with you. It has been an honor sharing the screen with you, and it has been extremely beautiful, extremely insightful to see you. The Rhea who joined the show day one, and the Rhea who was standing in the finale and talking about how those 30 days have been a life in itself. It's been a whole experience. It's been an honor with you, working with you also, Manu, and it's been great to have you, bring about everything as an insider to people as to behind the scenes क्या क्या चलता है, क्योंकि like only we who are there know exactly how difficult it is, emotionally, mentally, physically, and I feel like I learned so much from this journey. I learned so much from the roadies, and their journeys inspired me, and like in their journeys I saw myself, and winning was just the cherry on the cake. And I mean, Indeed. I from the beginning, I mean, this is the best case scenario for any gang leader. I was I think just I going to had come to that part. That what you came first season as a leader. You come, you do your job, you drop the mic, and you're off. well, what can I say? दो बंदरों की लड़ाई में बाजी के बिल्ली मार गई. मार तो गई जी, बाजी तो मार गई. ये वाशु जी पता नहीं कहाँ फंस से गए हैं. ये I think because he's so excited now, Oh, yeah. उसका frequency जो है, उसके इंटरनेट के frequency को जो काट रहा है. उसका विनर वीडियो था ना, उसमें कहता है हम जीत गए and he's done. I've tried adding him. Try re-adding him. Till the time he comes here, yeah. So
I want to understand the feeling behind, coming as a gang leader for the first time. This was your first stint with MTV, Roadies, and then taking the trophy home. How's the feeling? How's the experience been? How is the whole thing turned out for you? So like you know that Abhimanyu, I started my career with MTV, Indeed. and I hadn't worked for 2-3 years after 2020, and it was a great restart for me because I restarted where I started and with Roadies, which was the biggest show of MTV's, which is the biggest show of MTV, and I'm so happy that I got the opportunity to restart here. Life came a full circle for me, and I really, when I started off the journey, I didn't know what to expect. I didn't know it's going to be this intensive. Everybody knows Roadie is the hardcore show, but you have to live it and experience it to understand how hardcore it really gets. Because हमें पता है, कितना मुश्किल हो जाता है. Even for the gang leaders, तो contestants का तो हम सोच ही नहीं सकते. And the whole journey taught me so much. It inspired me. It gave me strength, and it taught me resilience again. If I had not already kind of learned that lesson. And just having someone from my gang win is just like, and there's always just a little bit extra pleasure in beating two boys. दो लड़कों के हराने में जो मजा आता है ना, वो और किसी चीज में आप कंपेयर नहीं कर सकते. वो बिल्कुल भी चीज बनी. And I think the one point that you stated जो आपने बड़ी खूबसूरती से रखा कि how आपकी कहानी इस चैनल से शुरू हुई थी, और वो कहते हैं ना कि there's this old quote which I keep saying, the beginning of the end, and that's when the new story starts. So I think this has been the beginning of the end for you, and this is when the new chapter begins for you. Coming to the new chapter, throughout this whole chapter of MTV Roadies, मतलब सबसे ज्यादा रोडियंस है ना, मैं सबसे ज्यादा अलायंस पार्टनरशिप. आप एक बात बताओ, सच बताओ मुझे, आप स्ट्रैटेजीज करके आए थे क्या कि that's how I'm going to play the game? Honestly, no. I think that in Roadies, अगर strategy बना के भी आओगे तो कोई फायदा नहीं है, because there are so many twists and turns and googlies on a daily basis that आप चाहो भी तो you cannot be one step forward. आपको हमेशा आप one step पीछे ही हो, and all you can do is think on your feet in that moment and do the best for your gang. I was lucky कि मेरे gang members इतने अच्छा task perform कर रहे थे. Vashu's back. इतना अच्छा task perform कर रहे थे कि हमारे पास रोडियम आते जा रहे थे, immunity आते जा रहे थे. And of course, when it comes to vote outs, थोड़ा politics खेलना पड़ता है, which every gang played. And I'm just happy that the finale was not eventually about that. It was about pure skill. And in pure skill, I want to tell you, Vashu, अभी मैं फिर से देख रही थी, I was watching the truck part, and I was like, yeah, this guy should go to the Olympics. He's too good. Like the speed at which he does it. Everyone was shocked. I was shocked. And that's what in that terrain, उस जहाँ पे चलने में हमको दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में, ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहा था ये. I was like, वाशु के लंग्स कुछ अलग ही मिट्टी से बने, क्योंकि he doesn't get tired, he doesn't even half for a second. But तेरी सांसें कैसे चल रही है, कौन से फेफड़े हैं तेरे, कौन से लंग्स है? It is different. It is very difficult. हम लोग तो चल के we were like, plus Rhea, the altitude, the cold, and lack of oxygen. I think it's the worst trio possible. But ये सब तो ठीक है. मैं क्या जी, सत श्री अकाल, वाशु जी, congratulations MTV Roadies Karm Ya Kaand. शुक्रिया Manu. मेरे शेर, मेरे चीते, how does it feel, brother? You've taken the trophy back home. You're the winner of MTV Roadies. Oh my God, मेरे को तो मतलब मेरे को तो लग रहा है like आप क्या, जब BTS हुआ था ना, मैं इसको पकड़ के रो रहा था, पता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे को लग रहा है आज भी रो दोगे अगर मैं सामने आ गया आपके तो. हाँ, मैंने आज भी, और मुझे मतलब I mean इसको देखना, इसका जर्नी देखना has been so beautiful. मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं वाशु, नहीं तो मैं बोलते ही रहूंगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है. एक बार बोलने लगा मैं बोलते रहूंगा. तू बता मेरी भाई, you finally have taken the title. How does it feel? यार मतलब ना, जो इतने सालों से सपना देखा था कि रोडीज करना है, मतलब लाइफ में पहली बार मतलब इतना मोटिवेट हुआ था किसी चीज के लिए कि ये करना है. चलो एक्टिंग करना है, आर्टिस्ट बनना है, कुछ और चीज में करना है, ये सब करना है, बहुत चीजें करनी है. लेकिन जब रोडीज पहली बार देखा था तब ये आ गया था ये करना है लाइफ में, कुछ करो ना करो.
और उस दिन ये ठाना था, और करना ये ठाना था, है ये भाई, करना है बट ऐसा तोड़ के करना है। वही तो बोल रहा हूँ, उस दिन ये ठाना था जिस दिन भी रोडीज में जीतूंगा, जीते बिना नहीं जाना। जिस दिन मैं वोट आउट भी हो रहा था, इवन उस दिन मेरे को अंदर ही अंदर लग रहा था नहीं यार मैं नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जा सकता, मैं यहाँ स्टैंड नहीं करता। एंड और विन, जैसे वाशु हमेशा बोलता है शो में, he used to constantly tell me end or win. Win and win. And I used to tell him win and win, and now he's 1-1. And Vashu, I think it's firstly Roadies, winning Roadies is a very difficult thing. Big thing. Big thing. It is so difficult. It is so difficult on every level. और जब तक आप वो फिनाले तक पहुंचते हो, you are exhausted. You are exhausted physically, mentally, emotionally drained. So then to perform on that finale day, that's a whole different, mind calmness that you require, which Vashu showed in the finale. And physically, so everyone is fit, 100%. Vashu is slightly fitter than all of them. But mentally, I've seen a growth in this boy. I've seen a growth, I would like to say, since he came into my gang. Om Shanti. Om Shanti. I was going to add that, you said that the calmness, you said the growth. And the precursor behind this, वो कहते हैं ना कि हर अर्जुन को एक द्रोणाचार्य चाहिए रहता है तराशने के लिए, हर एक शिष्य को एक गुरु चाहिए रहता है, एक मेंटर चाहिए रहता है. And Rhea, you have been superb at that part. Thank you. I think he was also a very good shishya, as we call it, because all I used to tell him is just calm your emotions and go, because you have everything in you. You have all the potential that is ever required to win this show. And he did it, and he was very diligent. I think जो सबसे अच्छी बात मुझे वाशु की लगी is from the first task that I picked him once he came into my gang. I was like, यार तू खाली ओम और शांति चांट किया कर जाने से पहले, so control to center yourself. And I used to see him in the task, in between the task, जब task होने से पहले वो बेचारा करता भी था. He used to diligently do it. He didn't think कि यार मैम ने बोल दिया है तो whatever Rhea ने बोला है, let it be. He didn't do that. He actually took it seriously. And I used to see, he used to have so much energy because he's very young and bubbly, right? तो वो टास्क से पहले बहुत उछलता रहता था, बातें करता रहता, मैम इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे. I used to be like, okay, now sit quiet. You will not talk to anybody for the next 1 hour till the task starts. Go and sit in the corner. Even मुझे एक पार्ट याद है, जब वो ब्रिज वाला टास्क था, मैं कोने में जाके बैठा था, रिया मैम बोलती थोड़ा तो उठ जा, थोड़ा तो चिल कर ले, मजे कर ले. मैं चुपचाप बैठा. By then, नहीं. He took it to the next level. He's like, अब मैं बात ही नहीं कर सकता, कम now. This task is 3 hours away. But yeah, I mean, talking about task, वाशु मेरे भाई, मुझे वो टाइम याद है सीजन का, जब स्टार्टिंग में काफी जगह पर कुछ टास्क में कहीं ना कहीं कुछ अनबन हो रही थी, जिस कारण तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और टास्क हार रहे थे. एंड देन एकदम से आपने वो कहते हैं ना अलट पलट, ये जज्बात बदल दिए, आशाएं बदल दिए, ख्वाब बदल दिए लोगों के आपने यूं. तो उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक. तो ये मतलब ये क्या जादू गया है यार? मेरे हिसाब से ना, ये एक तो खुद के अंदर की एक विल पावर थी, एक ओम शांति भी था, एक चीज होती है ना कि किसी भी क्या कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है. क्या बात है, क्या बात. एंड मेरी कायनात ने मुझे मेरे सपने से मिला दिया. क्या बात है. बहुत ही खूबसूरती से आपकी कायनात ने आपको अपने सपने से मिलाया. मुझे कभी भी लगता है रिया, I feel you'll also relate with me on this point. अगर इसकी शुरुआत में उतना chaos नहीं होता ना, तो फिर कहानी नहीं बनती, तो फिर एकदम तो वो कहते हैं ना कि वो जगह पर भी होना जरूरी था जिससे वो आज इस जगह पर पहुंचे और उस जगह को और मान सके. बिल्कुल क्या बात कही मनु. आई थिंक दैट हम लोग सोचते हैं कि हमें पता है लाइफ में क्या होता है. वी डोंट नेवर नो. And the only thing we have in our control is this moment. And in that moment, if you can seize the moment and truly be in the moment, तो ही आपको पता चल सकता है कि अगले मोमेंट में क्या होगा, और अगला मोमेंट शायद आपके फेवर में हो सकता है. And that growth and that journey, and I think an underdog, Vashu was an underdog in the beginning. And underdog winning is just so much more exciting than someone who's constantly winning. Everyone's rooting for the underdog, right? I certainly was. I certainly still am. But he's no longer an underdog. He's the winner of Roadies Karm Ya Kaand, and it's a new journey for him. And I'm so excited to see this journey, Vashu, for your life. Ki
आगे क्या क्या होता है, आप क्या क्या अमेजिंग चीजें करते हो. रोडीज इज गिवन यू द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म to show your strength, your skill, your calmness, your nature. And this is just the beginning, and it's the most beautiful beginning. It's the most beautiful and well-deserved beginning for you. Very true. Very true. लाइक Vashu? पता है मनु, जब भी मैं ना मतलब अपना जर्नी को देखता हूँ ना, मतलब अगर फ्रेज करना चाहो ना तो इट्स मोर लाइक अ मूवी टाइप से कुछ एक वो आता है विजुअल Exactly. कि पीआई से आ रहा है एकदम बंदा, पीआई बूम जा रहा है, फाड़ रहा है, पीआई में सारे गैंग लीडर्स लड़ रहे हैं कि ये चाहिए. एंड देन उसके बाद फिर जर्नी में स्टार्टिंग में एक डाउनफॉल वाला ग्राफ आता है कि टास्क नहीं हो रहा है, शिट क्या हो रही है, चीजें समझ नहीं आ रही है. देन वोट आउट होके वापस आ रहा है बंदा, वोट आउट होने का देन गैंग स्वैप हो जा रही है, देन गैंग स्वैप होने का अचानक से एक जो चिंगारी थी वो आग बन गई, एंड देन बूम आसमान फाड़ दिया. बिल्कुल वो एक there's this thing which I think I also abide by. You win some or you learn some. You never lose some. You always win some or you learn some. And I think the first few tasks when you were doing in the journey, you were learning some or the other thing. जैसे रिया मैम ने बताया, and even Rhea मैम was learning you as a contestant. जब तुम उनके शागिर्द बनोगे तो वो आपको किस तरीके से चेंज करेगी, ठीक है? Yeah. It's been a beautiful एक कहते हैं ना, it's a beautiful tale. It's been fabricated, not fabricated. It's been culminated into a beautiful journey. वाशु मुझे बात बता, you said that कहीं ना कहीं जब वो मैं लाइन में खड़ा हुआ था, because I have gone through the same phase, right? जब मैं लाइन में क्या आपने क्या बोला? वो जो तुमने कहा कि जब तुम्हारी ये शुरुआत हुई थी, तुम लाइन में खड़े हुए थे and you were just thinking अच्छा आगे क्या होगा, फिर ये हुआ वो हुआ. मुझे बात बता, जब तू वहां पे लाइन में खड़ा हुआ है, ठीक है, वो कब का टाइम, ये वो अपना अर्ली मार्च अप्रैल का टाइम है ना, तब तूने कभी सोचा था कि ये आपका लाइफ का ट्रैजेक्टरी हो? What was going through your head when you were in the line? Like, did you ever envision that this is how Vashu Jain you learn? लाइक जब मैं इस साल लाइन पे खड़ा था, इसके पहले मैं लाइन में खड़ा, रिवॉल्यूशन के टाइम पे मैंने ऑडिशन दिया था, रियल लीडर्स के टाइम मैंने सोचा था ट्राई करने का, बट उस टाइम मैं एज के कारण नहीं कर पाया था. देन रिवॉल्यूशन में मैंने 4 सिटीज में ऑडिशन दिया था, 4 सिटीज में मेरा GD1 क्लियर नहीं हुआ था. एंड इस साल मुझे लग रहा था कि यार इस साल मतलब बहुत ज्यादा खुद से आ रही थी कि अगर पहले मैंने सीधा पुणे में ट्राई किया, मैं मतलब ट्राई करूंगा, एक जगह करूंगा, होना होगा तो एक जगह भी हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा. मैं सोच के गया और ने ये चीज किया था कि कोई नेगेटिव पॉइंट या कभी कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे अंदर जो निकाल पाएंगे. कोई भी जजेस ले आओ, किसी को भी ले आओ, कुछ ऐसा निकाल ही नहीं पाओगे कि कोई कमी छोड़ेंगे ही नहीं. पूरा प्रिपेयर्ड, कोई कमी छोड़ी नहीं. और मुझे एक बात बताओ, ये जब आपकी ये जर्नी चलती रही और फिर आपने दैट वो बीच में मोमेंट आया वेयर यू स्विच्ड गैंग्स, ठीक है, फ्रॉम प्रिंसेस गैंग टू रिया मैम्स गैंग, जो स्विच हुआ, तब तुम्हारे दिमाग पे क्या चल रहा था कि अब क्या होगा? व्हाट डू यू थिंकिंग दैट? लाइक उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब ऑलरेडी मेरे ना, जैसे गौतम सर की गैंग में देखो तो उस टाइम ना मेरे लिए गौतम सर की गैंग में ना कोई बंदा ऐसा वो नहीं था कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स है. रिया मैम वाली गैंग में ऋषभ था जो मुझे सपोर्ट कर रहा था, मैं भी कहीं ना कहीं उसे हर जगह सपोर्ट करता था स्टार्टिंग में. एंड प्रिंस सर की गैंग से पूरा सपोर्ट रहता था हमेशा से. तो अब मुझे लगा कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, कहीं अब किसी दिन इनको खुला मिला तो कहीं ये मेरे साथ गेम तो नहीं हो जाएगा. तो उन्होंने सपोर्ट किया पूरा एंड तक. लाइक शिवेत ने मुझे एंड तक सपोर्ट किया. शिवेत के लिए मतलब ऐसा था कि अगर कोई लास्ट प्रायोरिटी होगी तो तब मैं वाशु करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. बट कहीं ना कहीं मुझे उस मोमेंट पे लग रहा था कि अब अगर फंस गया ना बेटा तो घर निकल लेना बैग टांग के. पर यही जो आदमी सोचता है ना कि अब अगर फंस गया ना, तो फंसा नहीं, यू ग्रू. You were thinking that कहीं ना कहीं you were thinking कि oh man this is what I keep saying. मुझे भी लगता है Rhea, I think you'll also understand. What we just said कि हम सोचते हैं कि whatever happening, we have this habit of questioning the destiny or questioning the process. कि यार why me? Why has this happened with me? And then we fail to realize that there's a grand scheme of things which is way beyond our control. वही कहा था ना कि कर्मणकारी मा फलीसकता चलना. अपना काम करो, बाकी होगा यार, क्यों नहीं होगा? कौन रोक रहा है आपको? I agree completely. I had also never thought that A Vashu will come into my gang. B जिस तरह से पहले वो परफॉर्म कर रहा था, maybe I wasn't even want him to come.
because I was like, "Kya ho raha hai?" I don't know, right? But the moment he came into my gang, I don't know, I had a gut feeling on that first task wala day only. You know, Rajveer was saying, "Take me," and I have done. And by that point, Rajveer ने काफी actually अच्छा perform किया था उस दौरान तक, Very true. in comparison to Very true. Vashu. But I don't know, I just felt कि यार इस बंदे में आ गया एक fire है. I've seen it from day one. मैंने इसको audition में देखा है. I want to see him. I want to see कि शायद he's not got the right opportunity and the right gang leader to perform. Or and he did it, and I was right. And so I feel you must go with your gut feeling, and ultimately that's what counts. And I'm so happy कि it turned out the way it turned out. And you're absolutely right. कर्म करो और फल की चिंता ना करो. और फल की चिंता हम कर भी रहे थे, लेकिन कर्म ज्यादा कर रहे थे, और कर्म करते करते आज वाशु को मिला है सबसे बड़ा फल. And I'm really, really excited for him, and I'm really excited for myself. And this cannot be a better way to come back, and this cannot be a better way for this season to end for us, for me and Vashu at least. I think both. लाइक पता है मन्यू, मैं ये बिलीव करता है कि हमेशा कर्म करो. अनइंटेंशनली अगर कांड हो जाता है, अगर तुम्हारे मन में खोट आता है, मन में वो कांड वाली खोट आती है, तो समझ जाओ कि तुम कहीं ना कहीं अटक सकते हो. बट अनइंटेंशनली कांड हो जाते हैं जो चीजें. बट अगर तुम कर्मा में ऑलवेज बिलीव करोगे ना, तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है. बस ब्रो, बहुत ये जो कर्मण्यवादी मेरे लिए पूरी जर्नी का सबसे सैड और सबसे बेस्ट मोमेंट था जब मैं वोट आउट हुआ था. वो मोमेंट सबसे सैड हो गया था मेरे लिए कि उस मोमेंट में इट्स लाइक सब एंड हो गया था मेरे लिए. मैं समझ नहीं पा रहा था आगे, अगर लाइफ में भी आगे करूंगा तो किस मुंह से करूंगा कि यार अभी तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं और ऐसे जा रहा हूँ. बट फिर प्रिंस भाई एक भगवान की तरह आए, उन्होंने सोनू अस्त्र चला दिया मेरे लिए. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मैं नहीं जा सकता ऐसे. इतना अगर मैंने किया है, इतनी मेहनत करी है, तो ऐसे मेहनत नहीं जानी चाहिए. तो कहीं ना कहीं प्रिंस भाई को भी वहां भरोसा था कि ये बंदा कर देगा, कर देगा. I agree, and we should really thank प्रिंस की उसने जो अपना सोनू अस्त्र है वाशी पे लगाया, और उसका सोनू अस्त्र मेरे गैंग में आया. एंड आई वांट टू से कि गौतम का सोनू अस्त्र भी पल्लवी पे चला था. दोनों सोनू अस्त्र मेरे गैंग में आए, और वाशु पे फिर तीसरा सोनू अस्त्र लगा जो मेरा सोनू अस्त्र था फॉर द फिनाले. सो इट वाज जस्ट परफेक्ट. आई फील लाइक इट जस्ट अलाइंड. तो बाकी गैंग लीडर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए. लाइक सोनू अस्त्र बना ही मेरे लिए था, ऐसा लगता है. क्या बात है रिया. हाँ, यू नो आई वांट टू अंडरस्टैंड. ये तो पहला चैप्टर था रोडीज के साथ, और पहली चैप्टर में आप बाजी मार गए. What about the second chapter? Are we seeing you a second chapter again? Well, I hope so. I think that I've loved being part of this show. I've loved this whole journey. I've loved meeting all you people, and I've loved learning from the contestants and, you know, growing in this journey. It's, even for the gang leaders, this journey is about growth. You learn a lot. You learn a lot about yourself. You learn about staying calm or fighting for your gang. You're in a way, like, I felt like a mother towards my gang, and I'm like, how do you support them, and how do you take them to the finale, and how do you give them, you know, justice wherever required and things like that. So I would love to be, and hopefully next season will be bigger, brighter and better, and next season we could win again, who knows. But I'm just happy. I'm going to enjoy this moment, and I'm going to enjoy this victory for now, and who knows, आगे आगे देखते हैं होता है. You deserve it. And I think who knows, I'm pretty sure it's onwards and upwards from area. And both of you guys, congratulations. I think अगर वही बात जो मैं कह रहा था कि both of you guys have वो कहते हैं ना, कर्म कांड में वो कर्म वाला रास्ता चलता गया कहीं ना कहीं. कर्म की देखो, हम तो जीते हैं. पर अगर इनमें इस जीत में एक और इंसान है. कौन? भूलो मत. वो ना होता है तो मैं जर्नी में ना होता. अरे 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 नहीं, ये देखो जी, आपका ये आपके वो कहते हैं कि वही जो मैं आई थिंक द सेम कोट व्हिच कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलीशु गदाशन. बोथ ऑफ यू गाइस आर सुपर, एंड इट्स बीन अ ट्रीट, इट्स बीन एन ऑनर, इट्स बीन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल शेयरिंग द स्टेज विद यू. मैं चाहूंगा कि फिर कभी मौका मिले और फिर कभी ऐसा टाइम आए जब रिया को पकड़ के इंटरव्यू ले रहे हैं, वाशु को पकड़ के इंटरव्यू ले रहे हैं. बट ऑल इन ऑल वो कहते हैं ना कि इट्स द होल 30 days for me with all of you guys has been a life in itself, and a memory which I'll treasure for the rest of my life. And thank you so much
we finally reached the end of the season, guys. It was beautiful. It was superb. I wish you guys all the very best. Rhea, फिर कभी मुलाकात Thank you होगी. so much, Thank you so Manu. much इस चौराहे पर. Yes, फिर मुलाकात होगी. Vashu, चक दे Yes, ma'am. पत्ते. Check the Let's birthday. party, bro. Let's Win party, and win. guys. It was superb having you here, guys. Win फिर and मिलते win. हैं बहुत जल्द. Goodbye. शबा खैर. Bye bye. Guys, हम जीत गए. Well, that brings us officially to the end of MTV Roadies Karm Ya Kaand. What a season. What a story. जब भी कोई season खत्म होता है, it's always a very emotional moment for everyone, especially for me. This has been my third stint with MTV. First as a contestant, बाकी 2 बार as an insider. So thank you for that. We call it a day. We call it a night. It's been an honor. This is Abhimanyu Singh Raghav, officially signing off from MTV Roadies Karm Ya Kaand as the insider. मुलाकात होगी जल्द.